Okay, sir. So even if there is some problem here online, you still have the recording and you can go through those recordings. Yeah, Okay, that's now better, sir. like I said, my issue is not discuss each and individual essay or Okay, each yes, and sir. individual task. Basically, my job is to guide that instead of working like this. This is the way you should work. Because if you know the method, you only have to apply the method. Yes, sir. I focus more on teaching the methods than on actual. मेरा ये ऐसे check कर लो. Of course, I give the feedback क्योंकि issue is very simple. जो problems एक ऐसे में है, वो सब में आएंगे. Yes, sir. जो problem आपके एक speaking में, वो सब में आएंगे. Yes, sir. Those problems are not specific to a task. Those are general problems, right? Yes, So sir. my focus is to improve through it. Let's say eliminate those general problems. So now our focus is more on speaking and writing part. Yes, sir. Okay. Now, first today we will what we do माइक आपके is पास ले आऊं मैं? एक वो IELTS वाले क्या चेक करते हैं. सर आपका माइक आपके पास ले आओगे थोड़ा? Mic, माइक आपके पास है? we don't have this problem. Anyway, how is it now? Much better, sir. Much A better. bit better. Fine. Yes. Now, improved. Yes, sir. Okay. So now what we'll do is I'm going to first thing we'll cover is mistakes क्या होती हैं and Okay, sir. and examiners check क्या करते हैं in your speaking Okay. and writing. So Okay, sir. speaking and writing, yes. What do they check? Totally. Plus only in grammar, what are the mistakes? That is the first Okay, thing sir. we'll cover today. So it is What do they check? Okay, sir. Okay, sir. now is this I can hear you properly. Is this PPT visible to you? Screen? Is the Yes. PPT visible? No, sir. Yeah, now it is visible, Now it sir. is visible. So it is what Okay, do what? examiners check and check करते हैं only in writing and speaking module. Because in Writing and speaking module. Okay. reading and listening, there is only wrong and right answer. Right answer, sir. उसमें True. भी check करने का नहीं होता. Checking is only in writing and speaking. Speaking module. Yes, sir. So what do they check? This is the first thing we will cover today. So what do examiners check? Yes, sir. 23 things. Mm-hmm. Grammar में ही there are 10 things they check. Now that's a separate issue. वो हम इस cover करने वाले हैं. Okay, sir. Spellings, Spellings. marks of punctuation. Okay, sir. Now number of words. Task 1, you have to write 150 words. Task 2, you have to write 250 words. Okay, sir. Now ensure that you don't write less than these words. 150 and Okay. 250. Yes, sir. कम है तो penalty है. Yes, sir. But also don't write too many extra words also. Okay, sir. 250 है तो there is no point in writing 300 words. Because वो extra 50 words का आपको कुछ benefit मिलने वाला नहीं है. नहीं है. पर penalty मिलेगी. Okay, sir. Penalty कैसे मिलेगी? There will be mistakes in on those extra 50 words. Mistakes की penalty है. Yes, sir. You will take extra time to write those 50 words. उस टाइम को आप रिवीजन में यूज कर सकते थे. Yes, true. Right? So if it is 250, 260 is okay, 265 is okay, but 240 is not okay. कम वर्ड्स की पेनल्टी है.
बहुत ज्यादा लिखने का बेनिफिट नहीं है, सो स्टिक टू 250 प्लस 8 or 10 words and revise. Okay, so grammar, Okay. spellings, marks of punctuation, number of words, ये आपको तो बताया होगा। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी एंड कोहेरेंस क्या है? Coherence is the how easy it is to read the passage, if I'm एंड not व्हाट wrong. इज कॉन्टिन्यूटी? Continuity is the link between the passage, I think. I'm not sure. Hello. हाँ जी, हाँ जी, आई कैन लिसन यू, डोंट वरी। Yeah, that continuity would be how the link, how it is continued, the essay. इन सिंपल in वर्ड्स, the- यू नो, वी राइट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस हैं। Right, कॉन्टिन्यूटी मींस योर सेंटेंस नंबर 1 and 2 के बीच में एक लिंक होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 1 right. पढ़ के Cohesive बस device. पता लग जाना चाहिए इसके आगे क्या आने वाला है, Okay. You और mean आगे using of वही होना cohesive चाहिए, devices? आगे वही होना चाहिए जो सेंटेंस नंबर 1 बता रहा है। दैट इज कॉन्टिन्यूटी। कोहेरेंस क्या है? आपको टॉपिक दे दिया गया है लिखने के लिए या बोलने के लिए। Yes, sir. कोहेरेंस इज योर होल राइटिंग और स्पीकिंग शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, Okay, sir. राइट? Yes, sir. Okay, so clarity means, again clarity is very simple. It is the जो आपने लिखा हुआ है, it message should be clear from that. स्टाइल का आपको बता ही दिया है कि there is opening paragraph, then there is body, there is closing paragraph. Each paragraph has an opening sentence, body, closing sentence. Style, that is style. Yes, sir. Focus on topic. ये स्ट्रक्चर यही है इसका बेसिकली। ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग। Range of vocabulary means words should not be repeated. Wherever possible, wherever you have to use same word, try to use a synonym or antonym. Word Yes, sir. choice, opening and closing. Now these 13 things is what they check in speaking and writing both. Okay, sir. लेकिन ग्रामर के अंदर ही 10 चीजें चेक की जाती हैं, एंड वो 10 चीजें कौन सी हैं? दैट इज योर 10 पॉइंट्स ग्रामर चेकलिस्ट। Okay, sir. फर्स्ट, व्हाट आर दीज आर्टिकल्स? यू नो आर्टिकल्स क्या है ये? A, D, N, if I'm not wrong. सो वी Three हैव articles, right? A and हाँ बोलिए। 3 article है ना सर? Actually there are not 2 or 3 articles, there are actually 2 articles. A and Definite article, that is the, and second is indefinite article. Indefinite article में दो हैं, a and an, okay. right? But in terms of groups, we have only 2 type of articles, definite and indefinite. Okay. Now, whatever you see on the left here, written in the red, is wrong. So Bought the I pen. bought the pen, गलत है। क्यों गलत है? The pen is in general. It can be any pen. So no, what is right? No, there's nothing like general or this thing. So how do I decide that I cannot use a definite article? इसका कुछ छोटा सा thumb rule है आपके पास? May usually, if like if it is a proper noun or a noun, we use an a and First, articles cannot be used in front of a proper noun. Proper nouns are names. Names के आगे तो names. article Yes. use कर ही Name नहीं क्या? सकते। हाँ नहीं use होता है. True. Now I'll tell you, very simple. एक तो the को use करने की अपने rules हैं, उनके उसके अपने rules हैं। इसके अलावा
You know, this is communication. लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन का टूल है. Yes. कम्युनिकेशन में दो लोग हैं, वन इज द सेंडर, अनदर इज द रिसीवर. Yes, sir. And in every communication, we are always talking about either a person or a thing. हर कम्युनिकेशन में या किसी आदमी का या किसी जगह या चीज का नाम यूज किया जाता है. इसके बिना कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसको तो हमेशा पता होता है वो किस चीज का, किस आदमी का या किस जगह के बारे में बात कर रहा है, उसको तो पता होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रिसीव कर रहा है कम्युनिकेशन को, जो पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसको भी पता हो कि सेंडर किस चीज के बारे में बात कर रहा है. ये जरूरी नहीं. Yes, sir. अगर सेंडर को ये पता नहीं, रिसीवर को ये पता नहीं है सेंडर किस चीज की बात कर रहा है, then we cannot use definite article. We have to use only indefinite article. And ये सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या पता है कि रिसीवर को मालूम है वो किस चीज की बात कर रहा है. So when I say I bought the pen, so मैंने कौन सा पेन खरीदा ये मुझे तो पता है, बट ये जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको नहीं पता मैंने कौन सा पेन खरीदा. So here I cannot use a definite article. I have to use indefinite article. Indefinite article. दूसरी चीज जो a और n है, they can be used only in front of singular, countable, common nouns. सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए. पेन के आगे यूज किया जाएगा, पार्कर पेन के आगे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्कर पेन पर्टिकुलर नाउन हो गया, कॉमन नाउन नहीं रहा. Yes, sir. Right, so I bought the pen is wrong because it, that means in my first sentence in any paragraph I cannot use definite article. So use of correct article, first mistake. So ये इसका थोड़ा explanation है. Articles are adjectives, they modify noun. दो हैं, the, a and an. तो रेफर टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाउन मतलब वो नहीं जिनके यार जो नाम है किसी लोगों के, राम, रमेश, ताजमहल इत्यादि यूज नहीं किया जा सकता. ए एंड एन इज यूज्ड टू रेफर टू कॉमन नाउन्स. दो को डेफिनेट बोला जाता है, ए एंड एन को इंडेफिनेट. नाउ वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस, वी विल हैव अ सेशन ऑन दिस सेपरेटली, क्योंकि ये द कहाँ यूज किया जा सकता है, कहाँ यूज नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है. ए एंड एन तो इजी होता है. Yes, sir. Then personal pronoun should be in agreement with verb in present simple tense. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. You know we have to use s, es और is. कई बार कुछ sentences में we have to use either s or es or is with verb. ये मालूम है आपको? Yes, sir. Now there are 12 structures of sentences in terms of tense. Normally वो है जो structures है वो है simple tense, past tense, Yes, sir. continuous tense and perfect continuous, and then present, Okay. past and future. ये 12 structures है tenses के. 12 structures में से only in one structure we have to use s, es और is, and that is present simple tense. Present simple tense. Okay. इसके अलावा ये और कहीं यूज नहीं होता, बट यहाँ भी लोग गलत कर देते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड कहाँ ये लगता है, ये द सेंटेंस हैज टू फुलफिल 3 कंडीशंस व्हेन वी हैव टू यूज दिस. सो व्हिच आर दोस 3 कंडीशन, वो शायद आगे लिखा हुआ है. हियर 1 फर्स्ट कंडीशन वर्ब. दूसरा आपको पता है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का फॉर्मूला है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. Subject verb object.
वर्ब के बिना किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस नहीं बन सकता. Not Yes, only sir. English, in any language, verb is compulsory. Without verb, sentence cannot be made. In any Yes, sir. language, without subject, sentence can be made. Without object, sentence can be made. Without subject and object, sentence can be made. But without verb, sentence cannot be made. Yes, sir. First requirement is, जो verb है, it should be simple verb. Simple verb किसको? इसके पीछे वो ed या ing नहीं होता है. ING. Yes, sir. सेकंड कंडीशन, हमारे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए. यू नो व्हिच आर दीस हेल्पिंग वर्ब्स? No, sir. I don't know exactly. ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज हैं. वन इज कॉल्ड मॉडल एक्सुअलीज एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सुअली वर्ब. ये आपके इज, आर, एम, Model. वाज, Yeah. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह, इनको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है. तो हमारे सेंटेंस में Okay. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए. इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड कुछ नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज सब्जेक्ट Third होना person. चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर. You थर्ड see it. पर्सन सिंगुलर, कॉमन नाउन. Yes, अगर sir. आपका सेंटेंस ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, देन ओनली यू हैव टू यूज आइदर एस और ईएस और आईईएस. अभी एस, Okay, ईएस, sir. आईएस यूज करने का अपना स्पेलिंग का रूल है, Okay. वो विल कवर दैट Yes. सेपरेटली. सो Sir, I know that, sir. सॉरी. A bit. Yeah. I know. Yeah. I'm a bit familiar with that. तो Yes, sir. दूसरा प्रॉब्लम, पर्सनल नाउन प्रोनाउन शुड बी इन एग्रीमेंट विद वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. एक और रिक्वायरमेंट होती है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दैट इज समथिंग डिफरेंट. Okay. सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम, verb should be correct in tense and in active passive voice. Now can you tell me, जो sentence लिखा है फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड में, he finished his work yesterday, what is wrong with this sentence? Yes, it should be in past tense Why should it be past? because yesterday he's talking about yesterday. Okay, so and past का which tense? Past के तो continuous भी है, perfect भी है, perfect continuous भी है. It should be, I think, perfect. Perfect. This is not perfect tense. Not perfect. Past perfect, na? No, this is not. ये sentence जो है ये past perfect का नहीं है. Okay. He- Okay, now that in itself is a separate. Past tense. Now ये क्या है? We have प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का परफेक्ट, सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिस्टेक लोग क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोग एक टेंस वाला वर्ड गलत यूज कर देते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर गलत यूज कर देते हैं. ये दोनों का मेरा एक स्पेशल सेशन होता है इसका. नंबर वन, हाउ टू डिसाइड व्हिच टेंस टू यूज. सेकेंडली, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेंस. एंड थर्ड, वेयर दैट स्ट्रक्चर इज यूज्ड. ओके, नाउ Okay, sir. मैं आपको यहाँ मोटा मोटा बता देता हूँ. यहाँ एक फिनिश टाइम बताया गया है. यस्टरडे एक एग्जैक्ट टाइम है जिसके बारे में हमको पता है. Exact. When Yes, we sir. know the exact time of the activity and it is in the past, we have to use what is called past simple tense. Past simple tense. Yes, sir. तो past simple tense का स्ट्रक्चर है subject plus past tense of the verb plus object plus time expression. तो इसके लिए होना चाहिए he finished his work yesterday. Yesterday ने बताया है, आप past के exact time की बात कर रहे हो. And my where do I use this past का exact time? मेरे को knowledge है वो past simple tense में use होता है. And then मेरे को ये भी knowledge है past simple tense का structure है subject plus past tense of the verb. Right? So this is another mistake. Common mistakes. Verb वाला word use गलत use किया हुआ है. So यहाँ verb वाला word गलत था. दूसरा, पूरा sentence का structure ही गलत होता है.
राइट, so ये है आपके तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बेस फॉर्म, past simple, past participle, present Past participle and third person singular. participle. Yes, sir. ये प्लस ये यूज कहाँ होता है? पास्ट बेस फॉर्म का एक ही यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल का एक ही यूज है ओनली इन पास्ट सिंपल टेंस। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये यूज होता है ऑल परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस। प्रेजेंट जिसमें टाइम पार्टिसिपल, सॉरी, जिसमें टाइम फ्रेम मेंशन नहीं की उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में यूज होता है। परफेक्ट परफेक्ट टाइम टेंस। के सेंटेंस में एक्चुअली कभी एग्जैक्ट ओके। टाइम मेंशन किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। नाउ वी हाँ विल तो हैव अ उसमें क्या सेपरेट कर। सेशन ऑन दिस नो टेंसेस, ओके सर। राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ यहाँ एक बहुत जरूरी चीज जानने की होती है, वो यह इसकी इक्विसी दिस वर्ड टेस्ट, टेस्ट का बना पास्ट पार्टिसिपल टेस्टेड, टेस्टेड, प्ले से प्लेड, प्लेड, बट बिकम का बना बिकेम एंड बिकम, बिगिन का बना बिगेन एंड बिगन। ना रूल है, एक रूल है, आप बेस फॉर्म का जो वर्ब है उसमें ईडी लगा दो, बेस फॉर्म के वर्ब में ईडी रेगुलर लगा दो इरेगुलर। तो वो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट सिंपल बन जाता है, ईडी लगा दो। यस सर। बट ईडी। कई बार वर्ब में पहले ही डी ई लगा होता है तो वहां डी लगाया जाता है। एक रूल ये है, सो टेस्ट का टेस्टेड, प्ले का प्लेड, पेंट का पेंटेड, बट इन मैनी केसेस दिस रूल डज नॉट अप्लाई। जैसे बीट का बीट, इन रेगुलर वर्ब। वॉक, बिकम, बिकेम, बिकम। ना यस इसकी सर। दो कैटेगरी बन गई है जहाँ ये ईडी लगा के बनता है, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनको बोला जाता है रेगुलर वर्ब। यस सर। जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता उनको बोला जाता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर। यस सर। ये इरेगुलर वर्ब कौन कौन से हैं और इसके दूसरे फॉर्म कौन कौन से हैं, ये नॉलेज बहुत जरूरी है। यस सर। बस विदाउट दिस नॉलेज आपका जो सेंटेंस में आप वर्ब यूज कर दोगे वो गलत होगा। एंड यूज लिखा है। दूसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका तो बड़ा सिंपल है, ये जो बेस फॉर्म वाला वर्ब होता है उसके पीछे आईएनजी लगा दो, ये बन जाता है। एंड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक यूज, और बहुत सारे यूज है, एक यूज है continuous tense sentences, right? So you have the verb forms, so and how they are formed, regular verb, irregular verb, and ये V5 third person singular, इसका तो अपना एक अलग से चैप्टर है, we'll cover that maybe today itself. Verb form should be correct. Now यहाँ क्या था, he said ये जो हमने हमको यूज करना था फिनिश्ड, हमने यूज किया फिनिश्ड, यस सर। हेलो सॉरी सर। सर व्हाट डज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो मीन। अलग बात, वो एक अलग इशू है, we'll come to that ओके। differently. ये जो 10 चीजें चेक करता है ग्रामर की सिर्फ, ओके सर। focus to that. But today itself I'll tell you what is active and what is passive. Let's get through with this, right? तो यहाँ क्या था, हमने verb का past tense यूज करना था, तो past के बदले present tense लिखा हुआ है। This is one mistake. Verb should be correct in active and passive voice. दूसरा मिस्टेक क्या है, ये क्या कहता है, जरा पढ़िए इसको। वर्ब फॉर्म शुड बी करेक्ट। वर्ब फॉर्म मतलब ये आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर है, यस सर। सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट यस। टेंस का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ओके, यस आई रिमेंबर या। तो हाँ। ये क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दे हैव ट्राइड टू गो ऑन पिकनिक, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हैव। There can be two problems in this sentence. Have been trying. They have been trying to go to a picnic. And then second problem, Is that they are trying is the right. how do I Second problem. decide?
Now you see, depending now on इन structures हैं, बहुत simple सी बात है. Formalize subject, verb, object. And verb दो तरह के होते हैं. One is called helping verb, and then we have main verb. main verb, yeah. Right? Trying is a main verb. अगर helping verb have लिखा हुआ है, तो my knowledge of grammar says have is used in present perfect tense sentences. That is Yes, my sir. knowledge of grammar, sentence structure. And perfect tense का structure है subject plus have plus past participle of the verb. Yes, sir. ये होना चाहिए they have tried. They have tried, yes. But then दूसरा भी है, ing भी लिखा हुआ है. My knowledge of grammar says अगर verb में ing लिखा हुआ है तो Continuous. continuous tense में यूज होता है वो. Yes, sir. And continuous tense का structure है subject plus is, are, am plus verb plus ing. Yes, So sir. either they should be they are trying to go on picnic, or it should be they have tried to go on picnic. पहला वाला क्या था, sir? Either it should be they are trying to go on picnic, Yes. or they have tried to go on picnic. Yes, sir. Which one will be used is decided by the context. आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा. So ये प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सेंटेंस का ग्रामेटिकली वो गलत है. इसके पहले वाली प्रॉब्लम में जो मैंने वर्ब वाला वर्ड यूज किया है वो गलत था, स्ट्रक्चर सही था. यहाँ पूरा Yes, sir. स्ट्रक्चर ही गलत है. Okay. ये है, हालांकि हम इसका एक अलग से सेशन लेने वाले थे. तो ये स्ट्रक्चर, ये सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट सिंपल वर्ब एस ईएस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन. पास्ट सब्जेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन. फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सिंपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये सिंपल वर्ब के स्ट्रक्चर से, तो जो पीछे गया प्रॉब्लम वो वर्ब स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी. Then ये है आपका continuous tense के structures. We are going to have a separate session on this. And ये है आपका perfect tense के structure. And ये है आपके perfect continuous tense के structures. Structures क्या है और ये structure कहाँ कहाँ use होते हैं, this also we have to know. And then there are two separate independent sessions. चौथा हो गया पांचवा, and this is extremely important thing, subject verb agreement. Yes, sir. Which says अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. मतलब वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. रिवर्स नहीं होता है. सब्जेक्ट शुड नॉट बी इन एग्रीमेंट विद वर्ब. नो, वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. That is, if the subject is singular, verb should be singular. If the subject is plural, verb should be plural. Yes, sir. इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? Can you tell? Poor people. People are, what do we say? Plural. And has is singular. Yes, you're right. People plural है, यानी जो has है ये यूज किया जाता है singular, third person singular के लिए. Third person. Subject is plural, so it has to be have. The problem क्या होती है, confusion क्या होता है, जो first word है वो poor है. So लोगों को लगता है poor singular है, but poor is adjective. Poor is not noun. Noun वाला तो people है. Okay. So subject verb agreement itself a separate chapter that we will cover that separately. So this is another problem. Okay, sir. So this means basically subject verb agreement means if the subject is singular, verb wala word has to be singular. If subject is plural, both need to be plural. Sorry. Yes, sir. I got it. Okay. I was reading the sentence. Yes, sir.
Now this is another. Pronouns have proper antecedent. एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो वर्ड पहले चला गया प्रोनाउन को उससे एग्री करना है. नाउ कैन यू सिंपली एक्सप्लेन व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस? इफ द चाइल्ड डजंट लाइक कोल्ड मिल्क, बॉईल इट. Ensure the pronouns are proper. ओके, आई मेक इट सिंपलर फॉर यू. इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन वाले वर्ड कौन से, नाउन वाले वर्ड कौन से हैं और प्रोनाउन वाले वर्ड? Noun वाले कौन से हैं? ये नाउन वाले वर्ड कौन से हैं? Noun is child. ओके. And pronoun is what is cold. No, noun is milk हाँ. and child as well, I think. And cold and boil would be pronoun. नो, बॉईल तो वर्ब है. Boil is बॉईल इज वर्ब, बॉईल इज नॉट प्रोनाउन. yeah, okay. Boil is verb. Yes, yes, yes. Cold is also verb. Cold is not verb, cold is adjective. Adjective. Yes. Sorry, so getting confused. And child is noun. Child is noun, yes. And milk is also noun. Milk is noun. Pronoun वाला word कौन सा है? The is article. And pronoun वाला word कौन सा है? Like maybe. No, no, like is not pronoun. Like is Doesn't. no. That's what's left. Pronoun वाला word No? है it. It. Okay, which describes noun. Yes, yes. Okay, It. you in place of noun. So pronoun is it. Now जरा इसको translate करिए. If the child Doesn't like doesn't cold like milk, a पहले इसको boil translate. it. Okay. Okay, the wrong is because it means refers to child in the No, left my hand side. question is very simple. Translate the first sentence. If the child doesn't like cold milk, इसका मीनिंग क्या है? ट्रांसलेट कर दो. पंजाबी इसका है. मतलब हुआ कि अगर हाँ ओके समझ गया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर if the child doesn't like cold milk, अगर उन्हें ठंडा दूध पसंद नहीं है तो बच्चे ਨੂੰ boil कर दो. नो, बच्चे को Wrong बॉईल हुआ. कर दो नहीं. इसका ट्रांसलेशन है, Then अगर बच्चे को ठंडा दूध पसंद नहीं है तो उसे बॉईल कर दो. उसे boil कर दो. हाँ, but उससे मतलब it doesn't describe which उसको who. कि बच्चे को. Yeah, that doesn't make it Doesn't make sense. clear. That's what it says. Ensure that pronouns have proper antecedent. Antecedent का मतलब होता है जो पहले जा चुका है. Okay, नाउन से पहले नाउन वाले वर्ड जा चुके होते हैं. okay, सो प्रोनाउन वाले वर्ड है मिल्क और चाइल्ड. प्रोनाउन वाला वर्ड है इट. सो इट डजंट मेक इट. ये सेंटेंस में क्लियर नहीं हो रहा कि आपने कौन से नाउन को उबालना है. okay. दैट्स द मिस्टेक. एंश्योर दैट प्रोनाउंस हैव प्रॉपर एंटीसीडेंट. मतलब ये पता लग जाना चाहिए कि जो प्रोनाउन आपने यूज किया है वो किस नाउन के लिए यूज किया गया है. Okay, true. सो नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, बॉयल द मिल्क. तो पहला Yes, सेंटेंस में और एक चीज याद रखिए, बॉयल द मिल्क के बाद कॉमा आया हुआ है. दैट मींस बॉयल द मिल्क इज वन सेंटेंस. yes. इफ द चाइल्ड डजंट लाइक इट कोल्ड इज द सेकंड सेंटेंस. Independent and dependent, right? नो, वो एक अलग बात है. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट ये दो सेंटेंसेस हैं. ओके. Okay, sir. एंड एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए प्रोनाउन नहीं आ सकता. प्रोनाउन दूसरे सेंटेंस में आएगा. Okay, तो अभी यहाँ बहुत क्लियर हो गया. बॉयल द मिल्क इफ द चाइल्ड डजंट लाइक इट कोल्ड. दूध को उबालो अगर ये बच्चे को ठंडा पसंद नहीं है तो. नहीं है. Yes, sir. यहाँ था अगर बच्चे को ठंडा दूध पसंद नहीं है तो उसे उबालो. किसको उबालो भाई? राइट.
So here is another problem. Ensure that pronouns have proper antecedent. Pronoun हमेशा second sentence में होता है और उसके पहले noun जा चुके होते हैं. तो आपका प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज किया गया ये क्लियर होना चाहिए. Otherwise this sentence was sentence nonsense. Okay, 6, 7. We have two kind of nouns, countable, uncountable. ये non countable. ये तो आपको पता होगा countable, non countable का फर्क तो मालूम होगा. Yes sir, हाँ sir. Right? नहीं मालूम तो I can tell you in very simple form. Countable क्या है, non countable क्या है. Should I tell you? The hair is uncountable. If चलिए. So what it says is we have some adjectives. yes sir. Adjectives, कुछ adjective countable के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ adjectives non countable के लिए यूज किए जाते हैं. Yes sir. Much adjective है लेकिन much non count nouns के लिए यूज होता है. But friends countable noun है. Many countable के लिए यूज होता है, but rice non count noun है. So can you repeat that? Much is used for? Much is used for non-count nouns. Non-count noun. Okay. Yeah. There are some adjectives which are used for non-count nouns. Some adjectives are used for count nouns, countable nouns. Okay, like rice. Okay sir, got it. तो पहले मुझे ये जानना है कि जो नाउन वाला वर्ड है वो काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है. पहले तो ये जानना है. एडजेक्टिव तो बाद में डिसाइड होगा. राइट. सो फ्रेंड्स इज काउंटेबल. तो इसके साथ मच यूज नहीं किया जा सकता, मैनी यूज करना पड़ेगा. राइस इज नॉन काउंट. तो इसके साथ मैनी यूज नहीं किया जा सकता, मच यूज करना. दिस इज अनदर कॉमन. ये जो 10 है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इन द राइटिंग. एंड सम ऑफ देयर नाउ यू कैन लाइक recollect that some of in your writing some of these mistakes were there. 7. Prepositions. ये preposition क्या होती है? Correct. Preposition. At, in. Yeah. करते क्या है ये? Describes the pronoun. I'm not sure. Prepositions actually दो objects का relative position क्या है वो बताते हैं. Oh yes. ऊपर, नीचे, साइड में, दाएं, बाएं क्या है? आस पास. तो prepositions जो है एक छोटा सा वर्ड होता है. In, on, at, under, below, etc., etc. And they indicate relative position between two objects. इनका सही होना बहुत जरूरी है. जहां मुझे in यूज करना है. Object can be. What do you mean by like object? Any noun, pronoun, object. What? Between, see, object क्या होते हैं? Object तो noun pronoun ही होते हैं ना. Right? And it shows relative position between two objects. Now the objects can be, one object can be noun, another can be pronoun. Both can be pronoun, both can be nouns. Yes sir. Two objects. ऊपर है, नीचे है, ऊपर दाहिने है, बाएं में है, साइड में कहाँ है? Right? So जो word जो preposition इन कर सकता है वो ओवर नहीं कर सकता, वो अंडर नहीं कर सकता. So ensure that correct prepositions have been used. We are interested at your painting नहीं, we are interested in your painting. And English में ये इनमें बड़ा प्रॉब्लम है. So ये एक बार हमको by practice ही पता लगता है कि इन का यूज होगा, at का यूज होगा, अंडर का यूज होता है, साइड में कहाँ यूज होता है. This by practice
यू से जब लैंग्वेज चलती है। 8, Yes, sir. 9 प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू नो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? Uh, Parts of speech you mean that is tense, na? कि हाउ मेनी आर देयर? 12? 4? Not sure, sir. 4, na, sir? There Past are tense. 8 parts. 12 minus 8. 4. 8 parts of speech. Noun, pronoun, Okay. adjective, adverb, conjunction, preposition, mark of exclamation. There are Okay. 8 parts of speech. Right? Now, Yes. ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनकी एंड ये सारे इज नॉट ओनली इन इंग्लिश, ये हर लैंग्वेज में है। Okay. So the beauty of this is that each part of speech has a function and a place in the sentence. आप चाहे 2 वर्ड का सेंटेंस लिखो, ये 50 वर्ड का सेंटेंस लिखो, every word in that sentence will be one part of speech. या वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, and the place of each part of speech is fixed. Mm-hmm. Which means if I know which part of speech I have to use in a sentence, then I can make my sentence very simply because I know where that word has to be placed. Now, यहाँ एक sentence लिखा हुआ है, it was excellent work, and of course it's wrong. So what is wrong with this? Correct भी लिखा हुआ है side में. So what's wrong with this Okay, sentence? just a It was minute. excellent work. The adjective used. And Or, and we have to right? know, oh, It- excellence is not adjective. Excellent is noun. No. Noun, is it? Noun. Yeah, noun. Excellence is noun. And Yes. हमको use कौन सा word करना है यहाँ? Adjective. Adjective. You have to use adjective instead of adjective. Noun has been used. तो Yes. adjective वाला word है excellent, Okay, yeah. right? So wrong part of speech has been used. And the most important जो हमारे IELTS में बहुत यूज होता है, वो होते हैं if वाले sentence. If, If. right? Those are conditional sentences. Okay. Okay, they are used very extensively, and we have 4 type of conditional sentences: zero conditional, first conditional, Yes. second conditional, third conditional. और उन तीन चारों का अपना स्ट्रक्चर है, अपना यूज है, and we are going to have an exclusive session on these conditional sentences क्योंकि वो इतना छोटे में explain भी नहीं किया जा सकता. So conditional and if वाले sentences are used quite extensively in writing and speaking. तो ये कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No doubt, sir. Right. So this was what they checked in the speaking and writing. So some of these require additional exclusive sessions, especially Okay, sir. tenses, subject verb agreement, and conditional sentence. We will have that. So this is we have to be very careful. अभी आप and आपको इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है. Now you can Yes, start sir. thinking ये जो 10 ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, इनमें आप कौन सी मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं, Okay, sir. right? And start focusing on that. Now you had one question on active passive voice, right? Yes, sir. Yes, sir. So एक सेंटेंस लिखिए, मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाता हूँ. ठीक है Right? सर, बताओ. I am reading a book. I am Reading a book. a book. Okay, Right? sir.
नाउ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है? Subject is book. सब्जेक्ट इज नॉट बुक, Read. I. Sorry. राइट? आई। I is book. I is subject. Sorry. वर्ब वाला वर्ड कौन सा है? Verb is reading. एंड ऑब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है? Object is I. ऑब्जेक्ट इज I, right? नो, Object is book, you mean? बुक, यस। नाउ सी, सिंपल फॉर्मूला है, माइंड में बिठा ले। Sir, what is I then? I is subject. आई सब्जेक्ट, read book, Okay. reading of course in this case, and object is book। Book, yes. सेंटेंस का फॉर्मूला है इंग्लिश की सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। Object, yes, sir. In all English sentences, subject is always the first word in a sentence. First Yes, word. sir. It can be a word, it can be phrase also. Okay, sir. Verb is second word. Second word. So immediately after subject we have verb. And I am. This am is a helping verb verb, दो तरह के होते हैं. One is helping verb and second is main verb. main verb. So reading is main verb. Now am is helping verb and reading is main verb. So what we mean is action वाला verb कौन सा है? Action वाला verb तो read है, Reading, yes, sir. right? And then object. Object is Book. book. Okay. Now Hmm. इस सेंटेंस में ये जो read का action कौन कर रहा है? Subject. Read is an action. Somebody is doing that action. Who is doing the That action? is I. I. And वो action pass हो रहा है, किसी को किसके ऊपर pass हो रहा है action? Book. Action pass किसके Book. ऊपर हो रहा है? Book, right? Book. Now Yes, see sir. इस sentence में क्या हो रहा है? There is a subject of the sentence. Subject is I. Subject is also doer of the action. कर्ता I है and subject भी I ही है. So in these kind of sentences where subject is also doer of the action, we say in this type of sentence, verb is in the active form. ये active passive verb होता है, subject of the sentence and doer of the action is same. Okay. Now, The word subject is performing the verb. That is the reason it is active. reason why it is active is because subject of the sentence and doer of the action are both same. Okay. Now same sentence can be written in another way. वो दूसरा भी लिखिए. The other sentence, a book A book. is being read. Read की spelling भी R-E-A-D ही है. The book Yes, is sir. being read by me. A book is being read By by. me. Here the subject is Subject वाला word कौन सा है? read. A. No. A adjective है, article है. Article, right? Subject is book. Subject is Book. Subject, see subject क्या हो सकता है? Subject can be a person, place, thing or idea. okay, sir. Person, place, thing or idea. Subject and object can be only these words. Okay. तो इसमें जो person, place और thing है वो तो book है. तो article है, adjective है. Verb वाला word कौन सा है सेंटेंस में? Being No. read. That's right. Verb तो अभी भी read ही है. Verb read है. Read से read बना, read से reading बना. Verb is read या read.
एंड डूअर कौन है? मी। ये एक्टिविटी जो है उसका डूअर कौन है, करता कौन है? मी। दैट्स राइट। सेंटेंस को अलग तरीके से लिखने से करता थोड़ी बदल जाएगा। डूअर इज स्टिल सेम, दैट इज मी। बट इस सेंटेंस में क्या हुआ, जो आपका सब्जेक्ट है बुक, दैट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन कहीं और चला गया। So in these type of sentences where subject is not doer of the action, we say these are in this case verb is in the passive form. वर्ब अपना रीड हुआ ना सर? वर्ब मतलब रीड है, बट रीड से रेड बना, बिकॉज उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा हमको। हाँ सर, वो समझ होती गया। है। एन ऑब्जेक्ट मी हुआ ना सर? ऑब्जेक्ट वी आर नॉट, एज फार एज एक्टिव पैसिव इज कंसर्न, वी आर नॉट कंसर्न ऑब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है, वी आर नॉट कंसर्न विद पर दैट। तो भी सर देखने जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मी हुआ ना? No, our discussion is confined to active and passive type sentences. ओके। Active and passive type sentences are concerned with only this: is the subject doer of the action, yes or no? ओके। If the subject is doer of the action, verb is in the active form. If the subject is not doer of the action, verb is in the passive form. ओके सर। वो ऑब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है, हमें इस एक्टिव पैसिव में इससे कुछ लेना देना नहीं। ओके सर। यानी चेंज करने के रूल है एक्चुअली। आई कैन नॉट हम्म। सिंपली राइट विच एवर आई वांट। सो एक्टिव जब हम्म। पैसिव में कन्वर्ट होता है तो उसके रूल क्या है वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, बट बेसिकली फंडामेंटली एक्टिव वॉइस इज व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन, ओके सर। पैसिव इज व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन। हम्म। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो चारों को चेंज करने के अपने अलग से रूल हैं, दैट्स सेपरेट थिंग। बट फंडामेंटली if your subject is doer of the action, active; if subject is not doer of the action, passive. And जहाँ तक हो सके try to use both of them in the writing, because that indicates, shows your command over the language. कुछ एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं, कुछ पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, राइट? तो वो थोड़ा आपका एग्जामिनर थोड़ा तो उसको पता लगता है कि इनको दोनों को यूज करना आता है, आता है। राइट? सो यस दैट्स सर। योर एक्टिव पैसिव। देन और एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉर्मली हम लोग बोलते टाइम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ लिखते टाइम ही यूज कर सकते हैं। ओके। बट हमारे लिखने में जो आइलेट्स का लिखना होता है उसमें नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्म यूज करते ही नहीं है, हम लोग इनडायरेक्ट ही यूज करते हम्म। हैं। और आपको जानना तो मैं ये भी बता देता हूँ डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, जानना चाहोगे? यस सर। ओके फाइन। नो, वो भी आपको बता देता हूँ। नो सपोज आई एम, मैं, हम दो लोग बात करने हैं आपस हम्म। में, मैंने आपसे कुछ कहा। हम्म। नाउ टू टेल यू समथिंग आई यूज्ड सम वर्ड्स। हम्म। तो नाउ फॉर इंस्टेंस लेट अस से मैं, हमने आपस में क्या बातचीत की, वो इंफॉर्मेशन यू आर पासिंग ऑन टू योर फादर। ओके। ओके भाई, इंफॉर्मेशन पास करने के दो तरीके हैं। आइदर यू कैन यूज माय एग्जैक्ट वर्ड्स, जो मैंने कहा, यू आर रिपोर्टिंग सेम वर्ड्स। जब आप फादर से बात कर रहे हो तो जो वर्ड्स मैंने यूज किए थे आप डायरेक्ट वही वर्ड यूज करके उनको बता रहे हैं, राइट? कि उन्होंने कहा, एंड यू आर यूजिंग माय एग्जैक्ट वर्ड्स। So when you are using exact words of the speaker, this is called direct form of narration. ओके। When you are using exact words of the speaker. Suppose I tell you, आप मेरे से पूछ रहे हो, how many classes I should attend, and मैं आपको बोल रहा हूँ you should attend 10 classes.
एंड ये यू शुड यूज 10 क्लासेस आपने ऐसे कैसे फादर को बता दिया? यू शुड बिल्कुल यूज सही। 10 क्लासेस, मैंने आपको बोला था, एंड यू आर यूजिंग these words exactly to narrate to your father, मैंने आपको क्या पता? दैट इज डायरेक्ट। सेकंड इज आप यही चीज अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके उनको बता सकते हैं। आप ये बोल सकते हो उन्होंने कहा था कि मुझे 10 क्लास रन करनी चाहिए। अभी उन्होंने कहा था किसके वर्ड्स है? मेरे नहीं है। ये किसके वर्ड्स है? मेरे। दे आर योर वर्ड्स। दिस इज इनडायरेक्ट। ओके। Indirect is when you are passing message to somebody else, not using exact words, translating those words in your, let's say, own view without changing the meaning. Meaning नहीं बदल रहा, यस सर। नरेशन का फॉर्म बदल रहा है। दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिखने के रूल्स हैं, ओके। बट नॉर्मली यस सर। इन IELTS suggestion is don't use direct form, use indirect। और यस वैसे सर। भी डायरेक्ट फॉर्म आप बोलने में यूज ही नहीं कर सकते। इन व्हाइल स्पीकिंग यू कैन यूज ओनली इनडायरेक्ट फॉर्म। बट छोटा सा 5-10 मिनट का एक हम इसके ऊपर कभी ले लेंगे सेशन, चेंज कैसे होता ठीक है है, सर। राइट? आज के लिए सर इतना ही ठीक है सर। हाँ, आज के लिए। नो, ये तो शुरू हुआ है। नो, इन विल टेक वन मोर एंड देन कितना नाउ टाइम लगेगा सर? थक गए हो क्या? या सर आज के लिए तो था, क्योंकि सर आज बाहर आया हुआ था मेरे फ्रेंड के घर पे ही, ओके, इसीलिए। सो फॉर दैट्स ओके, तो यूजुअली सेशन, ओके विद सर मी। सेशन कितना टाइम तक रहेगा यूजुअली? नाउ फॉर हाउ मेनी डेज यू आर हियर? सर मेरा तो दो भी देखने जाएंगे तो कल मेरा भाई आया हुआ है यहाँ पर अहमदाबाद, उसको कुछ काम था, तो आई वुड स्टे टुमारो एज वेल। ओके, उसके बाद मेरा कल डिसाइड होगा, मेरा भाई आएगा ना उसके बाद, कि कल निकलूँ या परसों निकलूँ। so what इट you विल can do डिपेंड is अपॉन you हिम। can have, ये आपके tomorrow also we can have a session online ओके सर। and day after ओके। tomorrow, in fact session तो online है तो इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, या फर्क फिजिकली नहीं आओ पड़ता। आप, ठीक है सर। नहीं सर, physically who can और be, सर होमवर्क में क्या करूँ सर? see I have given you lot of material, यस सर। right? So I suggest now न्यू ईयर चला गया, हम्म। तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, एंजॉयमेंट वाला टाइम थोड़ा चला गया। सो नाउ व्हाट चलो यू गए, डू यस इज सर।